तो दोस्तों जैसा आप जानते हो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फाउंडेशन कोर्स इज टू इंप्रूव, इज टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने पे काम कर रहे हैं। So guys, as I was saying, I think you were not able to see me, that this batch is about building the foundation, building the roots of the engineering, and in that I am teaching you the physics that you study in class 12, because physics is the origin of engineering. Engineering totally relies on physics, and guys, if you are good at physics, then I believe you can learn engineering. Engineering वही बच्चा सीख सकता है जिसकी फिजिक्स अच्छी हो। और जैसा आपको दिख भी रहा होगा, मेरे शोल्डर पे क्या लिखा है, दैट यू हैव पोटेंशियल। तो बेटा आप सब में पोटेंशियल है, यू ऑल हैव पोटेंशियल, यू जस्ट हैव टू रियलाइज दैट पोटेंशियल, ओके। So guys, I am here to increase your potential energy, and let me introduce you myself. I am Ankit Goel. I am the director for GATE department at Unacademy, and I have obtained AIR 1 in GATE 2014 and 2018 in electrical, and that is why, my friend, that is why I believe I am the best suited educator to teach you all the subjects of electrical engineering as well as the foundation of electrical, which is the physics. I am a gold medalist from my college IIT Indore in BTech. I was awarded the President of India Gold Medal by the President himself. At that time, the president was Shri Pranab Mukherjee, and he gave me the gold medal in my college convocation. And my friend, I have taught till now, both online and offline, I have taught more than 1 lakh students. And I have created a revolution along with Unacademy in the GATE and ESE domain. If you want to join the revolution that I have created, my friend, then you had to join Unacademy using the code AnkitESE. AnkitESE is my code which tells me how much you guys love me, how much you guys respect me, and how much you guys want to prepare with me. That is only an indication of this factor that you want to continue a preparation with me and you want to prepare under my guidance. And guys, if you are visiting this channel for the first time, make sure that you subscribe. The most awesome content is being delivered on this channel right here, right now. So you have to subscribe to it, and you have to hit that bell icon so that you get notification of each and every session. Other than that, my friend, if you are a part of this batch, the foundation batch, then make sure, my friend, that you have shared the link of this video among all the student. आप सभी लोगों को शेयर करना है, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है आप तक कंटेंट पहुंचाना, और आपकी जिम्मेदारी है मेरे कंटेंट को इंडिया के हर कोने तक पहुंचाना। इस तरह से मिलकर के चलेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल, दिस चैनल विल बी सक्सेसफुल, दिस कम्युनिटी विल बी सक्सेसफुल, एंड ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स विल नेवर एवर गेट टू हियर दैट देयर बेसिक्स आर वीक। मैं नहीं चाहता मेरे देश का कोई इंजीनियर ये सुने कि भाई उसको बेसिक नहीं आता है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला है इस देश के इंजीनियर्स का बेसिक कमजोर है, तो ऐसा किसी को ना सुनना पड़े, इसीलिए आपको एक फाउंडेशन बैच को बच्चे तक, कोने कोने तक लेकर के जाना है। और अगर मेरे रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना है तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे दोस्त, अनअकैडमी इज नॉट एन अकैडमी, अनअकैडमी इज अ रेवोल्यूशन, अनअकैडमी इज अ फीलिंग, अनअकैडमी इज अनमैचेबल, रिमार्केबल, and Unacademy is unbelievable. So what are the benefits of the Plus subscription? We have live classes both in English as well as Hindi. We have crash courses, we have rank improvement batches, we have doubt clearing session, we have quizzes, we have previous year question, we have many more things, and that too just with one key and one subscription, just like Amazon Prime on Netflix. Nothing can be better than this. Nothing can be better than this, my friend. So let us start this session. And as you might have read, the objective of this session is to solve the problems on Coulomb's law. We have to solve a lot of problems on Coulomb's law to better our understanding for the basic. और अगले लेक्चर में हम चलेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इस लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं,
Then next lecture will be based on electric field. So let us start. First question, read it guys. Two spherical conductors B and C having equal radii, carrying equal charges, repel each other with a force F when they are kept apart a certain distance. A third spherical surface having the same radius as that of B is uncharged, brought in contact with B, then with C, and finally removed from both. The new force of repulsion. Try this everybody. Very easy question. We have seen multiple examples on this concept. I believe all of you can do it. Try this. Try this everybody. Be active. Be active. जोश होना चाहिए सारी जनता में. ठीक है, ये देख लेना आप लोग. जो बच्चे ये बैच अटेंड कर रहे हैं, आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनकी प्रिपरेशन का लेवल क्या होगा, और जो ये बैच अटेंड नहीं कर रहे, बेसिक्स वीक होते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन का लेवल क्या होगा. आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल नेवर एवर हैव टू टच द बेसिक कंसेप्ट. दैट मच आई विल प्रिपेयर यू फॉर. दैट मच आई विल प्रिपेयर यू फॉर. इज दैट क्लियर? And guys, make sure that you all have pressed the like button. I don't have to remind every day. I should not have to, because pressing the like button marks your attendance. Now everybody, tell me the answer. Tell me the answer everybody. जल्दी जल्दी बताओ यार, बैच के अंदर काफी सवाल लगाने हैं आज. इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा. चलो मैं बताता हूं. ठीक है. Now there are two spheres B and C. देखो, ये एक स्फीयर है B, ये एक स्फीयर है C. Now they have a certain distance D. ठीक है. Now the charges on both the spheres are Q. The force of repulsion is F. Now what is this F? Quickly tell me my friend. What is this F? Q square by 4 pi epsilon D square. Now a sphere having the same radius as that of B and uncharged is brought in contact with B. ऐसा मान लो कि वो दूसरा स्फीयर A है. अब चार्ज कितना है नेट? Q है. जब ये सेपरेट होंगे, when they will separate, both will have a charge Q by 2, Q by 2. Now this Q by 2 will be brought in contact with C. Will be brought in contact with C. The net charge is 3Q by 2. So when they will separate, the charge will equally distribute 3Q by 4 and 3Q by 4. So now guys, this B and this C, it has a charge Q by 2. Okay guys, now I think you must be able to see me and hear me. So there was a electricity cut off. Now if they are at distance D itself, what is the force between them? What is the force? Q by 2 into 3Q by 4 by 4 pi epsilon D square. Okay. Now this will become
that is 3f by 8. So the answer would be D. The answer, my friend, would be D. Is that clear? The answer would come out to be D. Now we are moving to the next problem, my friend. Try this one. Try this one. All basic problems. And you can think like this. Even in GATE exam, the questions from electrostatics are very, very basic. So you will be well prepared for such kind of questions. You will be well prepared for such kind of questions which are based on class 12th knowledge. Okay. Now try this everybody. जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, इस वजह से प्रॉब्लम था. अब आप सब लोग देख पा रहे होगे, सुन पा रहे होगे. सब लोग ट्राई करो. सब लोग ट्राई करो मेरे भाई. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with a force F, a third and then placed at midpoint. ठीक है, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, सारे बच्चे कर सकते हैं. अब अगर ये नहीं बना तो आप लोग कूलम्स लॉ में कुछ भी नहीं सीखे. इसीलिए आपको ये क्वेश्चन मुझे बना के दिखाना है. एवरीवन हैज टू प्रूव दैट दे हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग एज वेल एज कूलम्स लॉ. ठीक है, ट्राई दिस गाइस. अनुदीप, एक आइडियल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर सारा का सारा चार्ज फ्लो करके सरफेस पे आ जाता है. जब मैं आपको गॉस लॉ पढ़ाऊंगा ना, देन आई विल टेल यू अबाउट इट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर. आई विल प्रूव दैट फॉर यू. ठीक है, नाउ कम ऑन एवरीबॉडी, ट्राई दिस वन. लेट मी शो यू द सॉल्यूशन. Now there are two spheres A and B, and they repel each other with a force F, and they are kept at distance D. They are equally charged. They both have charge Q. Now what is this F? This F will be Q square by 4 pi epsilon D square. Now what happens? A third identical but uncharged sphere is brought in contact with A, then placed at the midpoint of A and B. Now when you bring a third charged sphere again in contact with A, the net charge is Q. Now when they are separated, both will have charge Q by 2 and charge Q by 2. So then it is placed at midpoint. Okay guys, so this is C, this is B. Both the distances are D by 2. And if you see, ये हमें बोल रहा है स्फीयर एंड आई एम ट्रीटिंग देम एज पॉइंट चार्जेस. व्हाई? द सेपरेशन इज एज्यूम्ड टू बी मच हायर देन द साइज. नाउ सी, बोथ द चार्जेस विल रिपेल C. A will be repelling C, B will also repel C. So what is the net force on C? Q by 2 into Q by 2. Okay. Now what will it come out to be? What will it come out to be? It will be 2 will be cancelled. Here 2 will remain. It will be how much?
it will become F, it will become 2F, so the answer would be F. I think the answer should be A. I think the answer should be A, guys. The answer should be F, because this will come out to be minus F. Minus F. Is that clear? Now, let us try the next one. Let us try the next one. Try this, guys. Try this. A very interesting problem. A very interesting problem, guys. What it says, two small balls having equal and positive charge Q on each are suspended by two insulated string of length L meter from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken into satellite where the space there is no gravity. We need to find the angle between the string and the tension in the string. And the tension in the string. ठीक है, ट्राई करो सभी लोग. बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि स्पेस दे दिया है. कोई मैकेनिक्स का ऐसा खास कंसेप्ट नहीं लगेगा, सब लोग बना सकते हैं. Everyone can do this. I know my foundation batch can do this. Try this, guys. I know you all can do this. If you can't do this, then no one can do this. Let me show you the solution. See, this is the position of the hook. This is how the wire is. Now the tension in the wire will be like this. The tension in the wire will be like this. And it will be making, suppose, an angle theta. So this tension can have two components, T cos theta and T sin theta. Now, ideally, this charge should have been acted by mg. This charge should have been acted by mg. So, under equilibrium, equilibrium means zero net force when there is no force. तब क्या होगा दोस्तों, T cos theta mg के बराबर होगा. लेकिन इसने बोल दिया है that there is no gravity in space, gravity is zero. That means that g is zero. So this T cos theta is zero or theta is 90. Theta is 90. The 90 means the angle between the string and the tension. The angle between the string and the tension. See this. 90 degree means the strings would be like this. The strings would be like this. So tension would be like this. So the angle between tension and the string is 180 degree. Now see this, this charge will experience an electrostatic force like this. So again, under equilibrium, this tension equal to electrostatic force. What is the length of the string? L. If this is L, it will be 2L square. 2L square. So what will be the answer? The answer would be A. The answer would be A. Okay. Yes, A and D are same. A and D are actually same. So both can be the answer. Both can be the answer. Both are same.
Try the next one, guys. Try the next one quickly. Today, let us finish this Coulomb's law so that tomorrow I can tell you about electric field. Quickly, guys. जोश दिखाओ यार, थोड़ा सा मचाओ क्वेश्चन के अंदर. क्या कर रहे हो? इतना ढीला ढीला काम नहीं चलेगा. अब फाउंडेशन बैच आ गया है. नाउ यू गाइस कांट गिव एन एक्सक्यूज. Now there is foundation batch. You can't give me an excuse that basics are weak. I am here to take care of your basics. कौशल देखो हुआ क्या, ग्रेविटी थी नहीं तो नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं था, तो ऊपर वाला फोर्स जो उसे बैलेंस करता मेरे भाई वो भी जीरो. If the downward force is zero, the upward balancing force is also zero. If that upward force is zero, that upward force was t cos theta. There is a tension in the string. This angle is theta. So the upward force is t cos theta. In space, the gravity is zero. So t cos theta is zero. That means theta would be 90. Theta 90 means the string is horizontal. The string is horizontal. That means the angle between string and the tension is 180. Now this tension should cancel the electrostatic force on the charge. This tension should cancel the electrostatic force. That means T should be equal to Fe. Simple. अब समझ आया कौशल? ओके. गड़बड़ कर दी विक्रम साहब, थोड़ा दिमाग लगाना था. Kaushal, is that question now clear? Okay, very good. Now let me show you the solution of this. There is one charge Q, there is another charge minus Q. Both have a distance d. Now what is the force of attraction? So this force of attraction F will be Q square by 4 pi epsilon d square. Okay, yes, actually Shubham is absolutely right. Now we take another sphere having a charge Q and we place it between the two spheres, d by 2, d by 2. Now the plus Q and plus Q will repel each other, F1, and minus Q will attract this, F2. So the net force will be the sum of the two. What is the force of repulsion? Q square force of attraction. बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने आंसर निकाला है, मजा आ गया यार. Literally you guys make me happy when you are able to solve the question. I really feel very happy that my efforts are going in the right direction. That is 8F. So the answer would be C. Answer would be C. Very good everybody. Try the next one. This is just like a marathon session. Question after question will keep on coming and you have to keep them cracking. Let's crack it guys. Let's crack it. Try this guys, come on. Very easy question. This is stable equilibrium. Not table, it is stable. Okay. Q is in stable equilibrium.
अनुज क्या समझ नहीं आया बताओ। मेरे भाई मिक्स लैंग्वेज का बैच है, आपको हिंदी में पूछना आप हिंदी में पूछो, मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूं। कम ऑन एवरीबॉडी ट्राई दिस वन, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अनिर्बन ने आंसर दिया है ए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो लेट मी स्टार्ट इट। So guys, there are three charges. There are three charges. One 4q at origin, then minus q at A, then 4q at 2A. अब देखो मेरे भाई, ये तो देखने से मालूम चल जा रहा है कि माइनस क्यू अट्रैक्ट होगा इधर भी और इधर भी, तो नेट फोर्स ऑन क्यू या माइनस क्यू, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू वुड बी 0। क्यों 0 है? बिकॉज इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बोथ साइड, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बराबर फोर्स से उसे खींचा जा रहा है। 4q की बात कर लेते हैं, किसी भी 4q वाले चार्ज की बात कर लो। देखो 4q विल रिपेल ईच अदर, 4q विल रिपेल ईच अदर एंड 4q minus q will attract each other, 4q will repel each other, 4q and q will attract each other. So force of repulsion minus force of attraction okay, so what it will be? ये आ गया 0। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई? ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, all the charges are in stable equilibrium. Okay guys, this question was about observation as well as about solving. Do you know, जब मैंने ये question पहली बार देखा, I also thought that minus q would be in stable and other two would be in unstable. I thought the answer would be A, but then when I started solving, I figured out something else entirely. And let me tell the electrical student, guys, your electrical machine is completely based on EMT, and if you want to study electrical machines from me, today only I have started a course of electrical machines in Hindi. You can come and join an academy, and to join an academy just give a call on this number, just give a call on this number to join an academy. Try the next one guys. गायत्री, डिस्टर्ब करोगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, फिर चेक करोगे नेट फोर्स। आप वैसे भी नेट फोर्स जब इक्वल टू 0 आ जाए तब आप कह दोगे इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर डिस्टर्ब करके देखें, अच्छा स्टेबल अनस्टेबल अभी हमने जज नहीं किया ना, सही बात है। Still now we haven't just stable or unstable. Now yes, Gayatri is absolutely right. Let us disturb the charges. अभी देखो ये जो 4-0 आया है ना, गायत्री का पॉइंट बिल्कुल सही है। इससे सिर्फ इतना मालूम चलता है, all charges are in equilibrium. Now stable unstable, how we will find that? Disturb charge, चार्ज को डिस्टर्ब कर देना मेरे भाई। देखो 4q, मान लो ये मिड पॉइंट था जहां पे माइनस q रखा था, I have shifted it here. When this goes closer,
to this 4q and minus q, this force of attraction increases. This force of attraction increases and this force of attraction reduces. F1 is greater than F2 because minus q is closer to 4q. That means minus q will move towards 4q. So does not come back. वापस नहीं आ रहा, और वापस नहीं आया तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया? ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेट्स गायत्री, आपने एक बग पकड़ा है मेरे सॉल्यूशन में कि अगर चार्ज लौट के नहीं आया तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं, ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? ऑप्शन जाना चाहिए सी। इक्विलिब्रियम में तो सारे हैं, ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो आप क्या लिखोगे? देखो ये चीज याद रखना, यार देखो नेटवर्क दीपांशी में डेली 4 से 5 अनअकैडमी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं एसी एनालिसिस कवर करा रहा हूं डेली 4 से 5। आप आ सकते हो, उसके लिए बस अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और फ्री क्लास अटेंड कर सकते हो। टू बी रिमेंबर्ड, व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड इज दैट फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, and for stable equilibrium disturb the charge and then check if it can come back, ठीक है? अगर वापस आया तो स्टेबल और नहीं आया तो अनस्टेबल। चलो अगला ट्राई करो। क्या बोला है? टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, repel each other with a certain force. They are brought in contact, then moved apart to a distance half of their separation. The force of repulsion becomes 4.5 times the ratio of initial charges. Let me solve this for you guys. This is Q1, this is Q2. They are brought in contact, they have the equal charges, then they are moved away. Now earlier they were repelling each other, suppose with a force F. They were at a distance D. Now they are at a distance D by 2 and they are repelling each other with a force 4.5 F. ठीक है? आधे डिस्टेंस पे हैं और 4.5 गुना फोर्स लग रहा है, 4.5 गुना फोर्स लग रहा है। Now let us see. F will be this, but 4.5 F will be now if we take the ratio, then what will happen? By 4 Q1 Q2,
d square by d by 2 square. So that means this will be q1 q2 square by q1 q2. Now what you will do is q1 square plus q2 square now divide both sides by q2 . See, this is a quadratic equation in q1 by q2. Quadratic equation in q1 by q2. Minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. So 2.5 2.5, this will be root 2.25, that is 1.5 by 2. This can either become 4 or 0.5, sorry 2 or 0.5. 2 or 0.5. So what is the options? So the answer would be 2. Okay, the answer would be 2. प्रज्ञा, मैंने बताया तो डेली शाम 4 से 5 एसी एनालिसिस पढ़ा रहा हूं. इसमें इलेक्ट्रिकल ईसी में अलग क्या है? सिलेबस एग्जैक्टली सेम है. आप लोग अटेंड तो करो यार. और नहीं मजा आ जाए, आपका नेटवर्क को देखने का नजरिया ना बदल जाए तो मुझे बताना. Try the next one, guys. Try the next one. We have less time left and we have more questions. It is saying two charges 4e and e are distance x apart. At what distance a charge q must be placed from charge plus e so that it is in equilibrium? Very easy question everybody. बहुत आसान है, मचा दोगे. जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो. ये वाला मैं सबके आंसर का इंतजार कर रहा हूं. क्विकली क्विकली, अब हाथ जल्दी चलना चाहिए. कम ऑन अनुज, आप भी कर सकते हो. जल्दी बनाओ मेरे भाई. आइडेंटिकली लाइक चार्जेस दिया था. टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग लाइक चार्जेस, यानी बॉल्स का साइज सेम है बट चार्जेस का नेचर सेम है. ठीक है अरुण? दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द बॉल्स आर इक्वल बट देयर चार्जेस आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. कम ऑन एवरीबॉडी. Let us see. There are two charges 4e and e. Now we have a charge q. We want to know at what distance should it be placed from d so that it is in equilibrium. Now both the charges will repel each other. Either both will attract or both will repel. So what I am doing is assume q is greater than 0. मैंने भाई पॉजिटिव मान लिया तो बोथ रिपेल करेंगे. अब जब दोनों रिपेल कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है? व्हाट डज इक्विलिब्रियम से? इट सेज दैट बोथ फोर्सेस ऑफ रिपल्शन मस्ट बी इक्वल. दैट इज 4e into q by 4 pi epsilon x minus d square okay. Now this 4 pi epsilon will get cancelled, eq will get cancelled, so 4d square
take the square root, x by 3. The answer would be C. The answer would be C. Try the next one guys, try the next one. Try the next one. बहुत easy question है, सब लोग बना दोगे, बस एक बार ट्राई करो. Pragna, now how are the basics? Pragna, now tell me how are the basics? Are you feeling more comfortable with the basics now, Pragna? Quickly guys, everybody try this. You guys can solve it. किशोर, ये सब गेट के क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, मैं गेट से पहले का आपका 12th वाला पार्ट बेसिक कवर कर रहा हूं, ताकि जो भी बच्चों को इंजीनियरिंग में दिक्कत होती है, कोर्स नहीं समझ आता है, उनके बेसिक सॉलिड रहे. ठीक है, बहुत सारे बच्चे 12th में ढील कर देते हैं या डिप्लोमा वाले होते हैं, तो ये सारा का सारा बैच उन बच्चों के लिए है. और ये बैच मैं आपको बता दूं, ये रेवोल्यूशनरी होने वाला है. ऐसा ना आज तक किसी ने किया, ना ही शायद कोई इस चीज को करने की हिम्मत करेगा. ठीक है, लेट मी ड्रॉ द फिगर गाइस. सो देयर आर 3 चार्जेस. There are 3 charges. What I want is later on, nobody should be able to compete with my foundation batch students. Can you guys ensure me that later on no one will be able to compete with you? Okay. Now चार्ज Q पे 4 0 आना चाहिए. अब फर्स्ट ऑफ ऑल 4Q and Q will repel each other. This will be the force of repulsion. To cancel this, there must be a force of attraction. So what I am saying is, to cancel F1, force of repulsion, F2 must be force of attraction. Now see guys, if F1 is equal to F2, what is F1? Q into 4Q by 4 pi epsilon 1 square. What is F2? Q into 4Q by 4 pi epsilon half square. Now this 4Q will get cancelled, 4 pi epsilon will get cancelled. This means this Q will be capital Q by 4. एक सेकेंड, basically this should be Q. We are talking about capital Q. Okay, this should be Q. So this will get cancelled, 4 into half square, this will come out to be Q. But since both must attract, so this Q will be minus Q. Answer would be D. ठीक है, Q नेगेटिव आना चाहिए, तभी वो अट्रैक्ट हो पाएंगे. मेरे भाई गेट में फर्क तो बहुत पड़ेगा, और ये तुमको समझ आएगा जब तुम EMT पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा अगर बेसिक कमजोर रह गया तो EMT नहीं पकड़ पाओगे, और अगर 12th अच्छे से किया था तो जरूरत नहीं है इस सब की. ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको इंजीनियरिंग की बेसिक चीजें सीखने में दिक्कत आती है. ठीक है, ट्राई दिस. इट सेज 2 equal negative charges are fixed at 0, A and 0, -A. A positive charge is released from rest at point 2A, 0. The charge will. तो देखो ये वाला मैं कराता हूं,
क्योंकि इतना आप लोग सोच पाओ थोड़ा सा मुश्किल चांस है। लेट मी शो दिस टू यू गाइस। ऑलवेज इन फिजिक्स और ईएमटी ट्राई एंड विजुअलाइज द प्रॉब्लम। हमेशा विजुअलाइजेशन करो। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये 0, ए पे है, ये भी माइनस क्यू चार्ज है, 0, माइनस ए पे है। एक पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू विच इज एट 2a, 0। अब देखो होगा क्या, व्हाट विल हैपन, these both charges will attract this, they will attract this. If they attract this charge, so it will experience a net force in this direction. It will experience a net force in this direction. Okay, let me say if this angle is theta, if this angle is theta, then what is the distance? If this is A, this is 90 degree, this is A, this is 90 degree. What is this distance? A by sin theta, A by sin theta. So the force that it will have will be 2 times देखो, अगर मेरा कोई भी लेक्चर पसंद आता है, कुछ भी कंटेंट पसंद आता है किसी भी टीचर का इस चैनल पे, तो मेरे भाई उसको स्प्रेड जरूर किया करो, प्लीज स्प्रेड इट। फ्री एजुकेशन कैन ओनली बिकम सक्सेसफुल if you guys take an initiative to spread it. ठीक है, now we want to see, this is the force F, this is the force F, but we want to know the horizontal component. We want to know the horizontal component. This will be 2f cos theta. देखो दो f होंगे ना ऐसे ऐसे, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल बनेगा f cos theta, f cos theta, तो 2f cos theta. ओके, this is the resultant force, this is the resultant force. Now what we have to see is, what is a square by sine square theta? What is a by sine theta? That is this distance. What about this distance? What about this? 1 minute. This will have maximum velocity here, then it will reach to a 0 velocity there, then again maximum. So this will be the mean position. See guys, if we directly see, but for SHM we need to know the displacement thing. For SHM we need to know the displacement wala part. So cos theta, a by cos theta, this is a. What is the base? Base will be a by tan theta. I think the answer would be D. The answer would be D. ठीक है, आंसर मैंने D क्यों बोला, ध्यान देना। ये देखो नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, ये दोनों नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव को खींचा। सो पॉजिटिव स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, इट स्टार्ट्स मूविंग. When it reaches origin, its velocity is non-zero. Why? Because the entire path it was experiencing a force. पूरे रास्ते उस पे फोर्स लग रहा था, तो उसकी स्पीड बढ़ती चलेगी. ओरिजिन पे पहुंचा तो स्पीड तो थी, अब वो लेफ्ट में निकल लिया. यानी क्या हुआ, नेगेटिव पुल्स द पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंग्स टू ओरिजिन. Here it will have non-zero velocity, it will go to the left. Now when it goes to the left, again they will start pulling it. When again they will pull it, it will again come back to origin. Then again velocity will be non-zero, it will again go back.
So it will keep on moving in both direction. But for SHM, force must be proportional to distance, and it is not proportional to distance. So the answer would be execute oscillatory, but not SHM. Is that clear? Oscillation तो होंगी ना, पहले 2a से आएगा 0 पे, 0 से वापस जाएगा -2a तक, फिर आएगा 0 पे, फिर 2a, फिर 0, फिर -2a, फिर 0, फिर 2a. तो that way it will keep on oscillating. विक्रम फोर्स 0 होगा, वेलोसिटी थोड़ी 0 होगी. ओरिजिन पे आया, फोर्स 0 था, यानी एक्सेलरेशन 0 थी. मुझे बताओ, अगर अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाना बंद कर दोगे, क्या गाड़ी रुक जाएगी तुरंत? नहीं रुकेगी ना, नहीं रुकेगी ना. तो इसका मतलब है वो भी आगे जाएगा. ओके गाइस, नाउ आई थिंक आई विल गिव यू दिस एज अ होमवर्क. This will be your homework. Okay, and we will discuss this tomorrow. Tomorrow we will discuss this. Now guys, since you are on the Creatrix channel, what you can see is my best videos that I have created on this channel, and you will really get to learn a lot. Like how to improve your focus, how can you have a laser focused mind, how can you crack GATE exam in 6 months, how can you study in lockdown, how you can revise a subject, and why did a blackout happen in the country like India. ये सारी वीडियोस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हैं और आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं. तो एक बार इन वीडियोस को देखना ना भूलें, ठीक है? नाउ दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एवरीबॉडी. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल where you can join it, and I'll give lots of free content. I'll give lots of free content. So join this channel and follow me on Unacademy app. Download Unacademy learning app. Every day at 4 PM I am teaching networks. I am teaching networks. Okay. So you have to follow me to attend all my free classes. All my free classes. विक्रम, आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं? एंड गाइस, दीज आर आवर अदर चैनल्स लाइक फॉर मैकेनिकल, फॉर सिविल. दिस इज फॉर एसएससी जेई ऑल ब्रांचेस. ओके, दिस इज फॉर एसएससी जेई ऑल ब्रांचेस. दिस इज कंप्यूटर साइंस. दिस इज फॉर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दीपांशी देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्टेंस ए है, ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज साइन थीटा. सो दैट मींस हाइपोटेनस इज परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा. ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. दिस वी विल डिस्कस टुमारो फर्स्ट थिंग, एंड देन वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. थैंक यू एवरीबॉडी, रियली एंजॉयड दिस सेशन, and I hope you keep attending more sessions like this. Thank you.